So we'll see passage 3. So in India, majority of farmers are marginal and small and less educated and possesses low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So इंडिया में मेजॉरिटी फार्मर मार्जिनल एंड स्मॉल हैं, दे आर लेस एजुकेटेड, दे हैव लो अडेप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज उनके पास पैसे की कमी है और अदर कंस्ट्रेंट्स भी हैं. सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनमस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज. तो ऑटोमेटिकली वो अडेप्ट कर पाएंगे, खुद ही अडेप्ट हो जाएंगे टू क्लाइमेट चेंज. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, इट वोंट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट द लॉसेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. सो अगर हो भी जाता है तो इट वॉन्ट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट द लॉसेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. टू डील विद दिस, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट. So what we'll have to focus on adaptation to climate change, and it's of paramount importance alongside a fast mitigation response. So we also focus on fast mitigation response. Another solution is to have a planned and policy driven adaptation. So we should have planned and policy driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendation. So they talk about government need to come up with policy recommendation. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. And so what is necessary? Perception. Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depend on whether they perceive it or not. तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फार्मर परसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. सो दे हैव टू अडेप्ट टू न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडेप्टेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. तो फार्मर्स को इसके बारे में भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज. ओनली देन फार्मर विल परसीव द seriousness of the situation. So now question is, which one of the following statement best reflects most logical and rational message conveyed by the author of the passage? So adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibility of the government. ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये गलत हो जाएगा. सो क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द लैंड यूज पैटर्न. लैंड यूज पैटर्न की पूरे में कोई बात नहीं की, तो गलत हो जाएगा. एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजन. तो लास्ट में यही लिखा था कि फार्मर्स को पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है क्लाइमेट चेंज से. वही मोटिवेट करेगा क्लाइमेट रिलेटेड चेंज करने के लिए. तो सी सही हो सकता है. फॉरवर्ड तो देखते हैं. सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विकर रिस्पॉन्स. पर ऐसा मिटिगेशन पॉसिबल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. तो आंसर विल बी सी.